Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. कैसे हैं सब? So before starting the session, I thought let's have a quick recap with all of you. And I want to know how many of you could able to recollect whatever we have learned. है ना? तो आप में से कितने लोग ये रिकलेक्ट कर पाएंगे कि हमने अभी तक के क्या क्या सीखा है? सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप टुगेदर. या सो हम साथ में मिलकर रिकैप करेंगे. सो फर्स्ट इज we got to know about 5 elements associated with the 5 fingers, right? So you have to tell me that which finger is associated with what. Okay, so I will show you the finger. मैं आपको उंगली दिखाऊंगा. And you need to tell me that it is associated with which तत्व. ठीक है, 5 उंगलियां 5 तत्व के साथ में कनेक्टेड है. So you have to tell me this. Okay, so first we will start with thumb. Thumb is related to which tattva from the 5 elements? Can you type in the chat box and let me know? Thumb is related to which tattva? Yes, fire element. Yeah. Then middle finger. Middle finger is associated with which tattva? Yes, space element. Yeah, space element. The last one, this ring finger. ये जल तत्व, राइट है ना, जल तत्व. देन 2 बच गए हमारे. सो this one is related to which tatva? Can you just type in the chat box? ये तो हम वोटिंग के लिए तो यूज करते हैं ना. This is related to which tatva? Vayu. Yes, vayu tatva, vayu tatva. And the last one, this, we started with this finger, earth element. Yeah, exactly. Yeah, so 5 fingers are associated with the 5 elements. Fire, you can also pronounce with me: fire, air, space, then earth and water. Yeah, after that you have to tell me that if I just make the position of the fingers, this mudra is for what? Okay, yeah, ready? So I'm making the position like this. ऐसे. This is called Kanishta Mudra. Okay, this is for what? Just Correct. type in. Written correct. BP. Yeah. बीपी या ब्लड प्रेशर के लिए ये मुद्रा हमें हेल्प करते हैं. ओके, देन आई एम मेकिंग द पोजीशन लाइक दिस. So we have to put down, but I'm just showing you this mudra. It's called Uttar Bodhini. This mudra is for what? Yes, correct. All the gynec issues. Okay, all the gynec issues, right? Yeah, people are writing nice. Then we got to know this mudra, Abhaya mudra. This is for फियरलेसनेस, राइट है ना. हमें अगर ब्रेवरी चाहिए, हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए और किसी के वो फियर कॉम्प्लेक्स हमें नहीं आना चाहिए, देन वी कैन प्रैक्टिस दिस मुद्रा. हाँ की नहीं मुद्रा. देन दिस वन वी हैव डन समथिंग लाइक दिस. दिस इज फॉर, इट्स कॉल्ड किडनी मुद्रा फॉर द किडनी रिलेटेड इश्यूज. Yeah, very nice. So all of you could relate some or the other elements and the learnings. Yesterday we got to know about Shankha Mudra. Yes. So Shank, we have to make something like this and connect in this way. Oh, I have to make the position like this. Give me 1 second. So it is, see, I have to practice. Yes. So can you see it? So Shankha Mudra. Shankha Mudra is for what? Yeah. Type in. Thyroid. Yeah, they've written correct. Anything? Yes.
throat and thyroid. गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको, गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, फॉर दैट यू कैन मेक द शंख मुद्रा. Yes, so ma'am is here. Last day I will ask all the mudras whatever we have done till now. Okay, so in the start of the session we will do that. Okay, and all of you will get the PDF of day 1, day 2, day 3, day 4, yeah, along with today's recording. Those who are the paid members of our community, definitely you will get it, and for free members you have to become paid members, yeah. For getting the access to all this. Yeah, ma'am. So over to you. I have just tried sharing the and Okay. yeah. Thank you, Kanchan. Okay, before today we are going to talk of on Vayu Tattva. But before we get on to that, I just want to share screen of day 2. Some people could not catch some names of the mudras. So I will just share that day 2 PDF and then we move on to day 4. So आज दर्द से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें मुद्रास पता चलेंगे. We'll get to know the mudras for whatever pain you're struggling with in the body. Okay, so day 2, we did Jala Vriddhi Mudra, and that is to enhance the Jala Tattva. Vriddhi. Vriddhi in Sanskrit means to enhance. Jala Mudra to balance, and Jalodhara Nashaka. We are reducing. Nasha is reduction. Now, some people have asked what should be the pressure level. It should be just a light touch. There should be no pressure. Light touch itself activates the neural motor endings at the fingertips. Then we did Kanishta Mudra. Kanishta means the tiny little finger is called Kanishta. Uttara Bodhi. It's not Uttara Bodhini, it is Uttara Bodhi Mudra. Kidney Mudra, Bhairava Mudra, Abhaya Mudra, and Hakini Mudra. Okay, so that is what is day 2. Now we move on to today's topic, which is Vayu Tattva. Now Vayu means anything, Vayu means air. So which means anything that is gaseous. And we know Vayu moves freely. And when it moves freely, it carries with it the fragrance, it carries whatever comes its way. And don't we feel suffocated when there is no Vayu? We say today everything is still. So the same thing in our body, what happens is the innate quality is that Vayu moves through contraction and expansion. हमारे शरीर में जब वायु किसी जगह stuck हो जाती है, joints में when it gets stuck, we have joint problem. When वायु chest में stuck हो जाती है, तो heart problem, suffocation लगता है, bloating लगता है. So Vayu has to move freely because Vayu का nature है to move freely. Okay, so how do we free this Vayu? When there is excessive Vayu, we get this problem. It gets stuck in different places. And joint problem, ठीक है, थोड़ा age से वो fluid भी कम होता है, but main problem that Vayu creates is gout, rheumatism, sciatica, and convulsions, heart problems, trembling of hands. All of these, if you can do, because you keep taking medicines year after year after year, उसके बदले अगर आप कम से कम 2 महीने डेडिकेटेड 45 मिनट 50 मिनट वायु मुद्रा करो, तो यू विल सी द डिफरेंस. मेडिसिन में स्टॉप करने नहीं कह रही हूँ, कंटिन्यू विद योर मेडिसिन, बट experience the difference after doing the mudra, then decide what you want to do. वायु मुद्रा मतलब ये वायु तत्व है, इसको हम सिर्फ प्रेस करते हैं, that's all.
Vayu is responsible for sensory and motor nerves. It is responsible for blood circulation, gastric issues, movement of blood, bodily fluids, any fluids. It moves with the help of Vayu, whether you call it urine or semen or whatever it is. So we have to ensure that the Vayu moves freely. If it gets stuck, वहीं problem शुरू हो जाती है. Vayu Mudra. And इसका ये है कि it is good for any kind of pain. Sudden pain, 1 second please. Sudden pain अगर कहीं भी होता है तो it can be cured within 12 hours with Vayu Mudra. And while I was talking about Samana Mudra, मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको लेफ्ट फुट में स्प्रेन है तो आप राइट हैंड से वायु मुद्रा करो, ऑपोजिट साइड से. And with the left hand, you hold in Samana Mudra, also known as Mukula Mudra, and keep it on the area of pain. अगर राइट में स्प्रेन हुआ है तो लेफ्ट से वायु मुद्रा करो, राइट से मुकुला मुद्रा करके वो एरिया पे रखो जहां पेन है. Now, it also reduces facial paralysis, वात पित्त का बैलेंस होता है, arthritis, rheumatism, gout, सब चीज के लिए वायु. It's only वायु that creates all these problems. अगर joints में air stuck है, you must do at least for 30 minutes वायु मुद्रा, followed by 10 minutes of prana mudra. फूड के बाद अगर किसी दिन लगता है इमीडिएटली गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, इमीडिएटली डू वायु मुद्रा. एक वन लेडी इन हर ऑफिस, they were sort of ridiculing कि क्या मुद्रा से होता है. तो शी टोल्ड देम, चलो ऐसे बैठो 2 मिनट. वो 2 मिनट में उनको बर्पिंग शुरू हो गया. You can also use one hand now to sit like this and one hand से अगर notes करना है तो, या सुनते सुनते आप दोनों हाथ से भी कर लो. Yes, Apana Mudra for food, I have said, but this is if one experiences bloating immediately after food, do Vayu Mudra. Vayu Mudra करने से immediately blood circulation also improves and there is relief in any part of the body. Okay. Yeah. So this is Vayu Mudra. Gout, rheumatism, sciatica, bloating and gas, any kind of pain, air stuck in joints. Okay. The next one is Apana Vayu Mudra, which is a combination of two mudras, Apana Mudra and Vayu Mudra. So you bend your index finger to the base of the thumb, press it with your thumb, and the middle and ring finger tips you touch with the thumb tip. The little finger is upright and you keep like this on your knees, both the hands.
ये सभी ये करके देखे है ना, अंगूठे के This बेस पे। is a very vital mudra. सभी करके देखे ऐसे। हाँ। Bring your little index finger to the base of your thumb. थंब के नीचे इसको रखें, थंब से उसको प्रेस करें वायु, ये वायु मुद्रा हो गया। अब हम ये दो फिंगर्स जो अपाना मुद्रा में यूज करते हैं उसको थंब के टिप में ले आए। सो इट इज अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा को मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हृदय मुद्रा। दिस मुद्रा आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप घर में हर एक मेंबर को सिखा दो, even if they don't want to do anything, even if they don't believe in anything, because all of us would have experienced, रात में कभी हम उठते हैं, बस बेचैनी लग रही है, पता नहीं क्या है, बट नींद नहीं आ रही है। आप ये करो, आपको 1 मिनट 2 मिनट में रिलीफ मिलेगा। एनी बेचैनी इज ड्यू टू गैस, एंड इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड। इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर है, अपान वायु मुद्रा एंड इट्स बेनिफिट फॉर द हार्ट। इसका इफेक्ट इज फास्टर देन द टैबलेट सॉर्बिट्रेट। अगर अटैक आता है या लग रहा है कि अटैक जैसा है, आप उनका हाथ ऐसे कर दीजिए, अगर हाथ नहीं वो कर पा रहे, आप टेप लगा दीजिए। टिल दे रीच द हॉस्पिटल एटलीस्ट डैमेज नहीं होगा। टिल द डॉक्टर्स टेक ओवर, एटलीस्ट दे विल नॉट incur any damage to the arteries or the heart. So this teach everyone at home. कभी भी लगे बेचैनी या अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कर लो बस। Yes, correct. It helps prevent heart attacks and prevents recurrence. तो अगर एक बार हो चुका है तब तो जरूरी करो, it will not recur. हार्ट पैल्पिटेशन कम होता है। किसी 2 दिन पहले कोई पूछ रहे थे हार्ट पैल्पिटेशन के लिए, इट रिड्यूसेस हार्ट पैल्पिटेशंस। हेवीनेस ऑन द हार्ट, हेवीनेस क्यों होता है? एक तो गैसेस से ही होता है, जब कुछ ज्यादा खा लेते हैं गैस रिलीज नहीं हो रहा है, गैस वहीं पे अटक जाता है, वैसे चोकिंग लग रहा है। डू दिस मुद्रा इमीडिएटली। व्हाट हैपेंस इज कि इसमें ये करते ही प्राणा इज डायरेक्टेड टू द हार्ट एंड गैस इज रिलीज्ड, तो इमीडिएटली यू गेट रिलीफ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसमें एंजाइटी, पैनिक, ग्रीफ, क्योंकि घबराहट जो होती है ना वो एक फियर से होती है, एंड फियर इज नॉर्मली बेसलेस, या कोई एंजाइटी है, कुछ है तो घबराहट हो रही है, और उस घबराहट में ऑल द नर्व्स एंड ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं एंड वी फील चोक्ड, मूवमेंट ऑफ एयर इज स्टक। इट्स ऑल इन अ माइंड बेसिकली। हम लोग ही सोच सोच के अपने आप को बीमार करते हैं। त्रिदोषास इससे बैलेंस होते हैं। त्रिदोषास कई मुद्रा से बैलेंस होते हैं, वन ऑफ देम इज दिस। बट अगर किसी को सिर्फ त्रिदोषा प्रॉब्लम है, उसके लिए समान मुद्रा इज वेरी गुड, बट दिस ऑल्सो बैलेंसेस त्रिदोषा। रेस्पिरेटरी फंक्शन, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द चेस्ट रीजन, हार्ट चक्रा, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन भी इससे इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज होता है, एंड गैस्ट्रिक तो है ही है, gallbladder, liver functioning, because it's all in that region. Heart chakra is in that region. And emotional conflicts. Yes, I have shared the slide, ma'am, for you. Yeah. So these are the benefits of heart chakra. I mean, Apana Vayu chakra or Mrita Sanjeevani chakra. Okay. So can we move on to the next one? Yeah. Next is Garuda Mudra.
Garuda Mudra. Garuda, we all know, is the Vahana of Mahavishnu. Mahavishnu ke Vahan the Garuda. Garuda is the king of birds. So Garuda means what? It shows majestic, fearlessness. So when we hold this Garuda Mudra, it gives us the same characteristics as the bird that we have in mind. इसमें हम इसको form कैसे करते हैं? The right hand will come on this side, left will be face closer to your face. All the fingers are spread apart, और आप लेफ्ट के थंब को राइट थंब को प्रेस करो, तो आपका लेफ्ट थंब ऐसे मुड़ जाएगा. Yes. Usually at the chest level, Garuda Mudra, all fingers should be spread because Garuda के wings ऐसे पूरे spread होते थे. Now the two fire elements are coming together, so there's a burst of energy. Fantastic amount of energy you can feel with this. इसमें क्या होता है? Number one is immunity is enhanced. Keeps the prostate healthy. अगर prostate के लिए कर रहे हैं, then you hold this position at your lower abdomen level, close to the navel. It should be placed vertical or horizontal like No, this? it should be facing you. The So hand should be facing you like this. palms have to face you. And So at the abdomen, right? किसी भी पोजीशन में अगर एब्डोमिनल प्रॉब्लम है तो एब्डोमेन पे रखिए, अपर एब्डोमेन में है तो ऊपर रखिए, चेस्ट में है अगर फियर एंजाइटी इस सब चीज के लिए है तो चेस्ट लेवल पे रखिए. इफ एनीवन सफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक, तो सोने के पहले इसको 10 मिनट करके सो जाए. आप 1 हफ्ता करेंगे, यू विल बी आउट ऑफ दैट ट्रॉमा. I have experimented this on a boy, young boy of 27 years. Okay, so it's good for various other things, but the main thing is it's a symbol of strength and protection and freedom. Garuda के qualities को याद करो आप. Garuda symbolizes what? That is the characteristic that you get. The left hand is first closer to you. Right hand is, you can see my right hand is at the back and the left hand is closer to me. My left thumb presses on the right thumb. All fingers spread apart. I'll show you in the image also. ये देखिए, यहाँ पे ये image वैसे it's a mirror image, but it's actually the left which is pressing on the right. Improves blood circulation, digestion, symbol of strength, removes fatigue. तो आपको जिस भी जगह प्रॉब्लम है, प्रोस्ट्रेट है तो लोअर में रखिए, और डाइजेशन के लिए करना है तो आप मिडिल में रखिए, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट और फटीग के लिए करना है, एंजाइटी के लिए तो चेस्ट लेवल पे रखिए. Okay, Adi Mudra and Chain Mudra we will do at the end. Mukula Mudra, I have been talking of this very often. Mukula Mudra और समान मुद्रा, इसके बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं. आपको कहीं भी पेन है, कहीं भी, इवन somebody has asked about some eczema, तो आप उस एरिया पे भी रख सकते हैं. So somebody had asked a question कि जब हम हाथ हटा लेते तो that thing, I mean energy is not there and the pain starts. तो एक दिन में it will not have that effect, but you can feel कि जब 15 मिनट जो आपने रखा तो उसमें आपको पेन रिलीफ मिला. So it's working. So let it continue for a longer period, 45 days तक करिए आप, क्योंकि
एक बार करने से वो पेन ऐसा नहीं कि तुरंत चला जाएगा, बट यू नो कि वो रखने से पेन जा रहा है। ओवर टाइम वहां पे, जैसे डे 1 में आई हैड सेड, ओवर टाइम वहां पे एनर्जी बिल्डअप होने लगती है। And when the energy builds up over there, gradually you will start feeling the difference. पहले all the negative energy has to come out, purging has to take place. जब नेगेटिविटी पूरी रिलीज होगी तब पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर चेंजेस आएंगे. सो हैव पेशेंस. इसमें ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये जड़ से निकालता है. तो दैट इज समान मुद्रा और मुकुल मुद्रा. या, two very important pain relief mudras. We have the Kila Mudra. Kila Mudra is इसमें दो hand in different positions. In the left, on the left side, you will hold Akasha Mudra, touching the middle finger, and on the right is Prithvi Mudra. Okay, so this mudra enhances your calcium levels. एंड लोगों को एल्बोज में भी, यू नो, कंप्यूटर में काम करते करते, फोन पकड़ते पकड़ते एल्बोज में भी पेन होता है. जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, एयर स्टक इन जॉइंट्स, आर्थराइटिस जिनको है, हिप एंड नी पेन्स है, पेन आफ्टर क्लाइंबिंग हिल्स, तब काफ्स में पेन होने लगते हैं. Okay, so this is the Kila Mudra. Calcium levels are enhanced, elbow pain, joint pains, and you get pain after climbing hill or walking a lot, you know, calves में pain होने लगता है. It is for that. Left hand Akasha Mudra, right hand Prithvi Mudra. Always hands are facing upwards, placed on your knees. The next very important mudra, which most people have been asking for, is the Kati Mudra. We call it the spine mudra, we call it the Merudanda Mudra. इसमें left hand is, you know, ये वायु मुद्रा ठीक नहीं होता है. This index finger of the left hand is touching the first phalange of the thumb. ये जो first cut होता है, वहां टच करके उसके ऊपर thumb ऐसे bend हो जाएगा. We are not touching the tip. In Jnana Mudra, we are touching the tip. Here, we touch this first phalange and fold your thumb over your index finger. And right hand will be 1, 3, 5. Thumb, Akasha, and little finger. Alternate fingers. स्पाइन में, बैक में, ऊपर से लेके नीचे स्पाइन में एनी प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव. इसीलिए इसका नाम मेरुदंड भी कहते हैं. मेरुदंड मुद्रा, स्पाइन मुद्रा, बैक मुद्रा, वॉट एवर नेम यू वांट टू कॉल इट. घर में काम करते करते भी सडनली बैक में पेन हो जाता है. रेगुलर आपको नहीं है, लेकिन सडनली आज थोड़ा ज्यादा बेंड कर लिए, सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेन. डू दिस. And if you have slip disc, do it for 30 minutes, followed by Prana Mudra. So left hand always be the chin mudra. Yeah, not chin. No, no, no. It's not chin. It is, the index finger is touching the first, thumb ka cut. And then the thumb bends over it. Chin mudra to tip hota hai.
Yes, Chin yes. mudra is tip. Right. This is touching here, and then you bend this. Okay, This so should index always finger is remain at like the tip this. of the thumb. Index finger is at the thumb line and then bending the thumb. Yes, Yeah. yes. And the right hand Yeah. always 1, 3, 5. Alternate Yes. So fingers. right hand will be like 1, 3, 5. Yes. नहीं, आपका index finger खुला होना. हाँ, yes, correct. Yeah. But And you keep it like this. ऐसे सब करके देखिए तो आपको फिर पता चलेगा, अदरवाइज यू और विल फिर आप फॉरगेट भूल नहीं जाओ. आप एक बार कर लोगे हाउ तो टू याद मेक द रहेगा. पोजीशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पोजीशन कैसे बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू मेक इट रादर देन मेकिंग द नोट्स. ठीक है, तो किसी को भी पीठ का दर्द है उसके लिए ये करने के लिए बोले उनको, उनको आराम हो जाएगा. यस. Okay. Always ये बार-बार मैं repeat कर रही हूँ that it should always be on your knees, palm facing upwards. We can show through the slide also. Yeah. Left hand ऐसे है, right 1, 3, 5. यहाँ पे इमेज में कुछ गलत है. ये 1, 2, 4 हो गया. It's 1, 3, 5. Yes, pretty clear, ma'am. Yes. Right hand fingers has to be separate. You cannot touch it because they are alternate fingers. ठीक है. So Kila Mudra, Kati Mudra. These two for pain, Vayu Mudra for pain, Apana Vayu Mudra for pain, Garuda Mudra for various other problems. Wherever possible, hands have to be together. Always on the knees or thighs, whatever. It should not go out of your body. It should be within, touching within your body. Knees से आगे नहीं जाना चाहिए हाथ. Okay, so now there are a few things I just want to talk about. A few of the, we have not included many mudras, but there are some queries about mudras that are not a part of our 5-day course. Mudras तो 100 से ऊपर है और हर किसी को हर कुछ जरूरत नहीं होती है. But one or two important ones like snoring. स्नोरिंग ऐसी चीज है, एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे लोगों ने प्रॉब्लम्स भी क्वेरीज रेज किए हैं विच आर वेरी स्पेसिफिक अनलेस वी नो द डिटेल्स, वेरी डिफिकल्ट टू एडवाइस. सिर्फ मेरे को ये करने से, लाइक स्नोरिंग के मेनी रीजंस हो सकते हैं. वी डोंट नो द कॉज. It could be due to throat muscles, nasal muscles. It could be the palate inside the mouth, which is soft tissue. So we don't know the real reason. It could be some lungs issue. But whatever it is, generally, we have not done those two mudras yet. So I'll tell you when we come to those mudras. Osteoporosis, people ask, that's Vayu Mudra plus Prana Mudra. Always कोई भी chronic acute case है, always do Prana Mudra. Even fatty liver and liver cirrhosis, we have not included that mudra, which is excellent for it. Epilepsy also we have not included, but I can show epilepsy. It is holding your these two जो हम लोग अपाना के लिए लेते हैं, but we don't make apana mudra. We touch, ये दोनों के बीच का portion जो है, you bring your thumb at the center and it's like a मृगी का जो बोलते हैं ना, 2 सिंग हो गए. Yeah, so this is for epilepsy.
Mrigi Mudra. For cramps and catch, we have told many times, it's always Jala Mudra and Prana Mudra. Cyst is always Kidney Mudra and Surya Mudra. And somebody asked for swollen face and swollen eyes and spots under eyes. So it's very difficult, face swollen किस लिए है? Is it cholesterol? Is it water retention? So it's very difficult to advise unless we know the real cause. Okay, so we can take a few questions and then last 15 minutes, I want for Chin Mudra and Adi Mudra. Hair loss has been repeatedly said it's Prithvi Mudra. Maybe many have joined today, so they don't know, but PCOD, any gynecological problem, it is Uttara Bodhi Mudra. We have seen it. Yeah. Mudra practice we should do for knee pain and leg pain. Apana Vayu, Vayu. Apan Vayu and Vayu Mudra. Can you show once again, ma'am, for the people? Vayu Mudra Apan is Vayu. very good for all joint pains. Vayu Mudra. Yes, Vayu Mudra is for the joint pain. And then And Apan follow Vayu. this with Prana Mudra. Follow it with Prana Mudra. Yeah, follow it with the Pran Mudra. Pran Mudra look like this. Yeah, you can do it like this. And people, some people don't have time, so they want to do it while watching TV or walking or whatever. But जिनके पास time है, आप आंख बंद करके बैठो और जो भी आपको chant करना है, आप जिस भी भगवान पे or whatever you want to chant, just close your eyes and chant that, and you'll get much faster results. Yes. Mudra for sinus issue Tomorrow. Okay, you have to come tomorrow for that then. Migraine, sinus, Yeah. all we have tomorrow. Yes. Which mudra for body heat? Body एक is समान मुद्रा भी कर सकते हैं, वायु मुद्रा कर सकते हैं. Body heat, like they For feel lot of body heat in the heat, body. Prana Mudra. Because body heat is due to Pitta. Yes, you can do Prana Mudra. It's So due you to can Pitta. make So the Pitta pacify like करने के लिए आप प्राण मुद्रा करो. और एक मुद्रा कल और बता रहे हैं, वो थोड़ा difficult है. That's the only difficult mudra, but that's an excellent one. Yes, I have tried, but I also have to practice that. Yeah, which mudra is for varicose veins? Varicose veins का हम शायद कल बताए थे. Varicose veins is again Vayu Mudra only. Apana Vayu Mudra and Samana Mudra. Apana Vayu Yes, जो you अभी can देखे हैं do. हम, हाँ, and Samana. Saman Vayu is like this. No, Apana Vayu Apan Vayu, okay. and Samana. First do Apana Vayu, then do Samana. Samana means you hold this on the area of pain. Okay, Apan Vayu, we have to make first, we have to practice Apana with both the hands. And then Saman with both the hands. We can put the Saman Vayu mudra at particular location for the pain. Yes. Any specific mudra for ulcer issue? Stomach ulcers का कल बता रहे हैं हम लोग. कल बात करेंगे. थायराइड के लिए हमने एक मुद्रा किया था, शंख मुद्रा. ये सब गले के भी नहीं है. हाँ, गले से रिलेटेड जो भी है उसके लिए कर सकते हैं. ठीक है, शंख मुद्रा. फैटी लीवर तो पेट के संबंधी जो भी है उसके लिए. फैटी लीवर के लिए कौन से? लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर एंड फैटी लिवर के लिए जो है, एक्चुअली we have not included, but I can show it. We don't have it in our PPT. It was not part of it because बहुत mudras हो रहे थे. It is Sahaj Shankha Mudra. Yeah, one for is the Shankha fatty Mudra. liver, This is Sahaj Shankha. You clasp both your hands and thumbs जो है इस तरह से रहेंगे. They are just straight on the fingers. ये सहज शंख मुद्रा कर सकते हैं. किसी को भी लीवर, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है. इसमें you have to see
कि once you've kept like this, यहाँ देखिए मेरा right वाला index finger पहले आ रहा है. So hold like this for 10 minutes, then change your clasp so that the left comes in front. जैसे हम लोग शंख मुद्रा में भी इस हाथ से और इस हाथ से कर रहे हैं, सहज शंख में भी this and then you change it like this. Okay, got it. And Mudra for followed by this- Prithvi Mudra. Followed by Prithvi followed by Mudra. Prithvi. Yes, can you show the Prithvi Mudra once again for the people? Prithvi Mudra is the ring finger. Yeah. So you're connecting the Prithvi Tattva with the thumb. Yeah, right. Any mudra for the spondylitis? Spondylitis is the Kati Mudra. वो जो मेरुदंड मुद्रा बताया, spine mudra. And you can also keep, if it is, on your frozen shoulder or whatever, if it's on your left side, then use your right hand to keep in Mukula Samana Mudra like this. If it is on the spine, whatever till your hand stretches, keep it in Samana Mudra. अगर बैठ के नहीं होता, आप लेट के भी रख लो. It's easier if you lie down and keep it in Samana Mudra for the spine. Cervical. Mudra for Parkinson issue? Parkinson's का भी बताया था. Parkinson's is basically nerves and this thing. Parkinson's is Shunya Vayu Mudra and Jnana Mudra and Prana Mudra. Shunya Vayu we have shown. Yeah, Shunya Vayu हमने किया था like this. Yeah. And yes. Jnana Jnana Mudra and Prana. Shunya Vayu, Gyan and Prana. So Shunya Vayu will be 30 minutes, Jnana 15, Prana 15, and it has to be done thrice a day to see benefits in about a month. Parkinson's is not an easy this thing. Uska koi medical science mein to it's only like managing. That's true. So why not spend 1 month to see if you get any benefits, then prolong it for another month. Do it thrice a day. Parkinson's वाले तो फिर ऐसे भी बहुत activity उनकी कम हो जाती है. So they can sit and hold this mudra. If it is bad and they can't hold it, put a tape. Band या tape लगा दीजिए. Is for autoimmune diseases. Autoimmune का भी बताया था. It is only Mukula Mudra because Tridosha balance and Panchatattva balance. Mukula Mudra. Can you show once again to the people? Samana Mudra, Mukula Mudra. Saman Mukula Mudra वो हम रख सकते हैं and with that it balances the system. Yes. Rheumatoid arthritis अभी बताए थे हम. Vayu Mudra. Cramps and catch. I feel like I'm getting the disease bank. And you are kind of the, the cashier of the bank who is just throwing the mudras for, various diseases you can just get rid of. Three dosha means we always have Vata, Pitta, Kapha dosha. Those are three doshas, 3 types of doshas according to Ayurveda. So all diseases occur because of imbalances in the body, whether it's three doshas or panchatattwas or the panchapranas. So Mukula Mudra does balancing of panchatattwas and three doshas. Yes, so many people, Sonia, so many people asking about the headache, migraine issue. Migraine, sinus, all that is tomorrow. And diabetes and all we have told many times. I think now we should move on to the Chin Mudra and Adi Mudra. Those are really important. Yeah. We will do a one thing I want to emphasize on for everyone. Okay, so these mudras, you will get to know which mudra can be helpful for which type of problem. You can just find out from the list which we will be sharing. But we need to practice it for some duration of time to see its effect. It's not like कि आपने कर लिया और 2 मिनट में जादू मंत्र हो गया. No, yes, ma'am. So we need to practice it for some duration of time to see the change of it for ourselves. So what we are doing, we are connecting certain points to feel energy inside, which you have to feel first. And then only you can feel the change in the body in relation to whatever problems or imbalance you are facing.
Yeah, so it is very important to practice because See, knowledge right is now जो there हम on. करेंगे वहां ये लोग everyone will experience what mudras can do. The two mudras that we'll meditate with right now, you will experience कि इस मुद्रा से ये हो सकता है और suddenly हम ये मुद्रा change करते हैं तो दूसरा part of the body move कर रहा है. You'll experience it right now. I was amazed the first day So, when I experienced it. so let's do experiential Now, part what we are now. going to talk about is, it is called, sectional breathing mudras, Vibhaga pranayama mudras. So Vibhaga means, we have left and right lobes of the lungs. So left way we have two lobes. We don't have the middle lobe because of the heart. Right way we have three lobes, upper lobe, middle lobe and lower lobe. And on the left, we have only the lower and the upper, no middle lobe. So when we say Vibhaga Pranayama means we can send oxygen to whichever lobe we want by holding a particular mudra. In terms of pranayama, it is not pranayama also English में जैसे होता है diaphragmatic breathing or thoracic breathing or clavicular breathing or collarbone breathing, whichever it is. तो हम आज दो मुद्रा करेंगे, एक में डायफ्राम मूव करेगा, एक में यू विल फील, एक्चुअली फील नाउ योर डायफ्राम इज नॉट मूविंग, योर कॉलर यू आर ब्रीथिंग फ्रॉम हियर. जो स्पोर्ट्स करते हैं बहुत जॉगिंग करके व्हेन दे कम बैक दे ब्रीथिंग वेरी हेवीली, तो देन ओनली दिस पोर्शन इज गोइंग अप because the air is going up only to the upper portion of the lungs. So you can do the same thing with the mudras, diaphragmatic or thoracic or clavicular. We are going to experience today diaphragmatic and the clavicular. Okay, now इनके benefits पहले बता दूं. Chin mudra is for diaphragmatic. Chin mudra we have seen yesterday कि ये ज्ञान मुद्रा but उल्टा करके. Our hands are fingers together. ये हम ऐसे रखते हैं इसमें. Now, Chin Mudra ka benefits we have discussed in detail as Jnana Mudra ka, except ki I had said ki one nerve crosses over here, so the oxygen goes to the lower lobes of the lungs. Okay, इसका main है कि अपान वायु इससे एक्टिवेट हो जाता है, because our lower lobes of the lung means it is quite close to our abdomen. So वहां नीचे में समान वायु और अपान वायु है, सो दैट ऑल्सो गेट्स एक्टिवेटेड. इसका बेनिफिट वो भी होता है अपार्ट फ्रॉम द डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग. एंड आदि मुद्रा, आदि मुद्रा का नाम ही आदि. आदि मीन्स एक तो व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न इट इज ऑलवेज इन दिस मुद्रा. दिस इज आदि मुद्रा. द थंब इज एट द बेस ऑफ द लिटिल फिंगर and all the fingers close over it. A newborn you will always find like this. Even why is it called Adi Mudra? Adi Yogi Bhagwan Shiva meditates in this mudra. Hands are palms facing upwards, kept on your knees. I'll just show the mudra once again. Your thumbs come to the base of the little finger. Little finger के base में thumb और सब fingers उस पे close हो जाते हैं. Okay, this is known as Adi Mudra. इसके phenomenal benefits हैं, and we always keep it like this on our knees or thighs. This harmonizes the function of all the sense organs because ये collar breathing है. कॉलर ब्रीदिंग मतलब द उदान वायु इज एक्टिवेटेड. तो जितने हमारे सेंस ऑर्गन सब यहाँ हैं, ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेटेड विद दिस आदि मुद्रा. देन upper lobes of the lungs are strengthened and receive more of the, we do not take in the quantity of air that the lung is made for. We don't even use 1/3 of the lung capacity. So this increases your capacity to take in
oxygen in the upper lobes of the lungs. And because all fingers are closed, इसमें leakage of energy minimum है. It's very good for cervical spondylitis because it is affecting your collar region. Those with cervical spondylitis should do this. It will really help them. And anxiety and tension, neurons in the brain are activated. And because it is activating all the glands here, तो communication भी increase होता है, including self communication, not only communication with others. अपने आप से भी हमें मिलना होता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है. And but those with high BP should not practice it for more than 5 minutes. It may increase the blood pressure. And since it is a meditative mudra, it brings a lot of calmness. Okay, so now we will do, and I want you to observe. आप जब ये मुद्रा hold करोगे, chin mudra, we will start with chin mudra. You will, after say 30 seconds, you will start seeing that your diaphragm is moving because it is diaphragmatic breathing. After I ask you to change to Adi Mudra, then you will see your chest, there's not chest, your collar is your neck se upar ja raha hai. Diaphragm and chest will not move. Okay, so let's close our eyes. Sit in Chin Mudra. Spine straight as far as possible. First, bring your attention to your nostrils. अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वास पर ध्यान दें. अब attention नाक से हटा लें. Remove your attention from the nose and try to observe diaphragm आपका ऊपर की ओर उठ रहा है. You start feeling more of air in the lower lobes of the lungs. आपके lungs के निचले भाग में आप ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हो. Observe the movement of the diaphragm.
डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करता है, इट डज नॉट एक्सपैंड इन द फ्रंट. You can observe the heart palpitation. Heart is calmer. Your mind has calmed down. Observe the changes in your mind, in your chest region. Now change your hand position to Adi Mudra. In a few seconds, you can feel that your collarbone is rising up. Upper lobes of the lungs में ज़्यादा energy flow. All your sense organs are calm, energized. Your nerves are calm. It calms the nervous system. You have no tensions. You have no anxieties. Your mind is calm and peaceful.
Your lung capacity is strengthened. Any pain in the neck region would have reduced. नेक रीजन में अगर कोई पेन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, उसमें भी आराम मिल रहा होगा. Once you've experienced the difference, very gradually move your fingers. धीरे से उंगलियों को हिलाएं, toes हिलाएं. Come back to the present. But पहले से calm and peaceful. हथेलियों को rub करके put them on your eyes. Open your eyes very, very gently. So, Kanchan, could Yes, you feel the difference? how you're feeling? Can you put in the chat box and let us know I how saw you're at feeling? least two ladies, including you, Kanchan. The clavicular breathing, I could see the collarbone going up in Adihotra. It was happening. Yeah. See, you can notice the difference. इस See, मुद्रा में कहाँ simple movement होता move. और इस मुद्रा में move. There's such a marked difference. So this should convince you that mudras work. Yes, yeah, true. तो आज के लिए हम 2-3 ही मुद्रा अगर हम ध्यान में रखें. पहला ये वायु कोई भी प्रकार का पेन हो या फिर कहीं पे भी एयर स्टक हो तो ये मुद्रा हम कर ले. ठीक है. अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो इसके साथ में ये उंगलियां ऐसे कनेक्ट करते. यस मैम, राइट. Yes. तो पहले दर्द के लिए, कोई भी प्रकार का दर्द हो उसके लिए ये मुद्रा करें. इट्स कॉल्ड वायु मुद्रा. अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो वो 3 उंगलियां ऐसे लगाते हैं. दिस हेल्प. फिर बाद में अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो ऐसे या इस Garuda, तरीके से गरुड़ा मुद्रा करें. यस. एंड दिस मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन. इट्स कॉल्ड, दिस इज फॉर द स्पाइनल प्रॉब्लम. लॉट ऑफ पीपल हैविंग द स्पाइनल प्रॉब्लम. सो आपको क्या करना है, एक ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड को ऐसे करेंगे सभी, और राइट हैंड को यू जस्ट टच 3 fingers लाइक दिस. जैसे 3 उंगलियां एक दूसरे से कनेक्ट करें. तो इफ यू आर हैविंग द स्लीप डेज, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ any of the back problem, spine problem, you can just put your hand like this and do practice for yourself. और कुछ भी पंचतत्व में गड़बड़ है, पेट वगैरह सब गड़बड़ है, तो इसको ये वाली मुद्रा करके you can just put and do it. Okay. Tomorrow we will see, ma'am will share the mudras related to the आकाश तत्व, the space element. है ना. तो हमारे शरीर में तो 99.9% स्पेस एलिमेंट है. हाँ, तो उससे रिलेटेड जो भी मुद्रास, टुमारो विल गेट टू नो 8 मुद्रास, है ना. सो सी यू टुमारो. कीप प्रैक्टिसिंग एंड टीच अदर पीपल आल्सो. So many people around us are facing Yes, the blood keep on pressure issue, teaching. the diabetes issue. Yeah, so many people are facing blood pressure, diabetes, heart problem. So you can just tell them, you also practice and you can tell them, yeah, you can do this mudra and help yourself when you are having the problem.
Okay, so see you tomorrow, same time. You will get the PDF for on day one, day two, day three, day four today, and along with the recording. Yeah, so you can check there and see you tomorrow. Then tomorrow will be the last day, ना देखो दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता. And if we are getting such a wonderful learning for ourselves, then definitely पता ही नहीं चलता कि समय निकल गया. Okay, so see you tomorrow, same time, 8:30 p.m. You can join. We'll do a quick revision and then we begin the session for the air space element. Yeah, tomorrow we'll see the space element. Okay, bye. Thank you so much, ma'am, for joining, and thank you, everyone.